हेलो एवरीवन। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट दी सिंगल जीन डिसऑर्डर। हम बात करेंगे सिंगल जीन डिसऑर्डर के बारे में। मीन्स ये पार्ट कौन सा है? ह्यूमन जेनेटिक्स एंड इट्स डिसऑर्डर में से हम बात करेंगे सिंगल जीन डिसऑर्डर। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो व्हाट इज रिसेसिव एबनॉर्मल जीन डिसऑर्डर। रिसेसिव एबनॉर्मल, ओके, एबनॉर्मल जीन डिसऑर्डर. Okay, what is gene? Everyone knows about the gene, right? Disorder means what? Gene is not properly ordered. So when you talk about recessive, it's a type of recessive autosomal disorder. ये क्या है? Autosomal. Autosomal means what? खुद से हो जाता है, राइट? देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन इनहेरिटेंस, व्हाट वी कैन से, उसको बोलते हैं ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर। ये जो जीन डिसऑर्डर हम बात कर रहे हैं, रिसेसिव एबनॉर्मल जीन डिसऑर्डर, ये क्या है? ऑटोसोमल है। ओके, अभी इसमें बहुत सारी चीज हम देखेंगे, जैसे कि फिनाइलक्यूटेरिया, अल्बिनिज्म, अल्कप्टेरिया, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट वेरी डिटेल मैनर। ओके, सो फिनाइल कीटोरिया, अगर उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया। ओके, देन अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म and the alkaptoria are caused by the absence of specific alkaptone, also called as a black urine, alkaptone urea. Okay, they are caused due to not availability of specific enzyme. Okay, so these 3 points are very much important. So let's start with our first point, that is phenylketonuria. Phenylketonuria. Okay, the name itself suggests something. What's that name itself is going to suggest you? It occurs due to the absence of phenylalanine. Okay, now see what we have done. Specific enzymes are not available. What we are talking about? Specific enzymes is not available in this case. So which enzyme is not available here? In phenylketonuria, there is the absence of, there is a first absence of phenylalanine. Phenylalanine hydroxylase enzyme in liver, which where it is present in liver, it is not properly functioning. Okay, what is the function of this phenyl hydroxylase? Okay, so it's actually phenyl alanine is going to convert with this enzyme, it's going to convert into what? Tyrosine. अगर अगर ये एंजाइम ही नहीं है तो ये कन्वर्जन होगा क्या? ये कन्वर्जन ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस फिनाइल हाइड्रोक्सिलेस. सो फिनाइल कीटोन यूरिया में फिनाइल हाइड्रोक्सिलेस which is present in liver is not present. So what will be problem? Phenylalanine is not converted into the tyrosine. If it is not converted into tyrosine, it will be leads to a problem, right? So it is characteristic. What are the characteristics of phenyl ketone urea? So what will be the characteristic? The first characteristic is severe mental retardation. First is severe mental retardation. That is the first characteristic is found. Okay. Then hypopigmentation of the skin. In those people, a hypopigmentation, one second, let me write it properly. Hypopigmentation. So pigmentation will be very prominent. Okay, so hypo means hypo. What is hypo? Not prominent, it's hypo, right? Don't get confused between hyper and hypo. Hypo means what? Leg pigmentation means skin is not properly pigmented, that is hypopigmentation. Okay, then of skin as well as hair, please point should be noted. Okay, and there will be a very itchy skin, and itchy skin is called as a eczema. Okay, so there is a lot of itchy skin issue will be there. Okay, and about there is a mousy odor of the skin. Apart from this, there is a odor. Which kind of odor?
mousy odor of a skin, because proper thing is not happened there. Okay, and skin plus hair and urine. बारिश में देखो कैसी स्मेल आती है, अगर कपड़े प्रॉपर्ली नहीं सूखेंगे तो वैसे मौसी। ओके, ड्यू टू दी इंक्रीज फिनाइल एलिन, ये किसकी वजह से आते हैं? फिनाइल एलिन कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, राइट? अगर फिनाइल एलिन कन्वर्ट ही नहीं हुआ है तो क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इन वेयर, इन ब्लड एंड यूरिन। Okay, so phenylketonuria is because of what, absence of phenylalanine hydroxylase which is present in liver. Okay, अगर phenylalanine responsible किसके लिए है? Hydroxylase enzyme, phenylalanine convert to tyrosine, but ये convert होगा क्या? नहीं होगा। So what are the characteristics? Severe mental retardation, hypopigmentation, itchy skin will be there, and mousy odor of the skin, hair, urine, and phenylalanine will be there. Okay, the next one we're going to talk about is the alkaptonuria. Okay, the name itself, see, alkaptonuria is also called as a black urine. It's also called as a black urine disease. Okay, why black urine? Because some black color should be there, right? That we understood from the first one. So obviously, which enzyme is not there? So also liver enzyme is there. All these specific enzymes are present, secreted by the liver. Okay, so the enzyme name is homogeneisate, homogeneisate, or it's also called as a alkapton oxidant, alkapton oxidase. This is the oxidase, and this is which is essential for what? Metabolism of homogeneic acid. It is responsible or leads to secretion of what? Homogenistic acid, homogenistic एसिड। अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो ये बनेगा नहीं, राइट? तो ये क्या करेगा? फिनाइलेशन को टायरोसिन को कन्वर्ट करेगा। लाइक सी, हमारे पास फर्स्ट वाला क्या था? कैन यू रिमेम्बर दिस पार्ट? क्या था? फिनाइलेलिन था, उसको कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में, तो एंजाइम लग रहा था, राइट? अभी ये क्या है हमारे बॉडी में? फिनाइल एलेनिन भी है, टायरोसिन भी है, उसको कन्वर्ट करना है होमोजेनिस्टिक एसिड, होमोजेनिस्टिक एसिड। तो ये एंजाइम यूज होगा यहाँ पे, बट अगर नहीं है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगा, राइट? तो ये इनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? ये कौन से है, ये चीज कौन सी है? वेस्ट मटेरियल, राइट? तो किस में ज्यादा बढ़ेगा? यूरिन में। तो यूरिन को कलरेशन कौन सा? ब्लैक कलर, दैट्स व्हाई द नेम इज। सो इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द increase excretion of increase excretion excretion of alkaptone, and its accumulation in body produces the arthritis. Alkaptone and its produces, see, its accumulation in the body, definitely it's not going away, so it's provide what? Arthritis, okay, and damages. So that is alkaptonuria. Now the third one, that is called as a albinism. Albinism. Now this albinism is arises due to absence of enzyme tyrosinase. So which enzyme? Tyrosinase, the name itself, okay, is absent over here. So there will it catalyze. Now this enzyme is responsible for what? The formation of the dihydroxyphenyl, that is dopa. This is responsible for dopa formation. What is dopa? Dihydroxyphenylalanine, that's called dopa. Okay, so which form the dark brown pigment. Dopa is responsible for what? Dark brown pigment. If it is not there, definitely the dark brown pigment will be not there. So during this, what is albinism? What going to happen? Your especially eye disorder is going to happen. The eye disorder. Why eye disorder? Because the brown pigment is not there. So it damages the from bright light. Okay, so that is albinism. Okay, after albinism, we have to study about the fourth one, that is
Tay-Sachs disease. Okay, what is Tay-Sachs disease? See, this is nothing but a fatty acid is not properly maintained in the body. So it is appear after birth. It's appear after birth due to what? Due to deficiency of the enzyme. Due to deficiency, हम एंजाइम वाले ही कर रहे हैं. कौन सा एंजाइम यहाँ पे नहीं होता? बीटा डी एन एसिटाइल, बीटा डी एन एसिटाइल हेक्सो हेक्सोसामिनेडेज, हेक्सोसामिनेडेज, हेक्सोसामिनेडेज. ओके, इट कैरेक्टरिस्टिक विद द एबनॉर्मल फैट मोलिज्म. ये क्या होगा यहाँ पे? अगर ये नहीं रहेगा तो एबनॉर्मल फैट फैट मेटाबॉलिज्म. तो ये ब्रेन को सीधा नहीं अफेक्ट करेगा? करेगा ना? यस. So it causes the mental retardation and causes mental retardation and paralysis. Okay, that is Tay-Sachs disease is there, which is responsible for enzyme is not there. Which enzyme is not there? Beta D N acetyl hexaminase. Okay. After that, we have to going to study of the thalassemia. Thalassemia, you must heard about that, right? Advertise bhi dekha rahega. So what is thalassemia? Is a group of genetic disorder. It is a group of genetic disorder. Okay, it's a group of genetic disorder which result from the defective synthesis of subunits of hemoglobin. Synthesis of hemoglobin is not proper. Hemoglobin subunit. Okay, subunit में problem है. Subunit is a problematic. So we can say there is a defect in this formation of. Okay. So alpha beta globin chains are the hemoglobin. Okay. अगर alpha, there are two types. Thalassemia के two types है. First, alpha thalassemia. Alpha thalassemia. अगर अल्फा थैलेसेमिया है, इसका मतलब व्हाट विल बी? इसका मतलब टेल मी कि उसके अल्फा सब यूनिट में इशू है. अल्फा सब यूनिट में इशू है तो कौन सा है यहाँ पे? आउट ऑफ 4 जीन्स ऑन द 11th क्रोमोसोम, आउट ऑफ 4 जीन्स ऑन 11th क्रोमोसोम, क्या इशू है इसमें? आउट ऑफ 4 11 क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ 2 जीन्स. देयर विल बी एब्सेंस ऑफ 2 जीन्स. ओके, 11 क्रोमोसोम में टोटल 4 रहने चाहिए, उसमें से कितने? 2 ही जीन प्रेजेंट है. ओके, दैट लीड्स टू hypochromic erythrocyte. If there is a absence, leads to hypochromic erythrocyte, erythrocyte along with microcytic. Okay, and what will be the second? Beta thalassemia. Very good, beta thalassemia. बीटा थैलेसेमिया क्या होगा? बीटा जो ग्लोबिन है, ओके, वो किसके ऊपर डिफरेंट है? क्रोमोसोम पे 6 क्रोमोसोम इज अफेक्टेड. 6 क्रोमोसोमल इज अफेक्टेड, ओके. 2 डिफेक्टिव जीन क्यों कौन होंगे? 2 डिफेक्ट होंगे यहाँ पे. ओके, दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. ओके, नाउ एज वी टॉकिंग अबाउट सिंगल जीन डिसऑर्डर, द नेक्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा? टेल मी. सिकल सेल एनीमिया is due to the inheritance of a defective allele. It is the inheritive, or we can say defective allele coding. Defective allele coding. Okay. Now, tell me one thing. What happened in sickle cell anemia according to you? So there will be a
result in a transformation of HbA into HbS, in which glutamic acid is replaced by the valine. We know that valine should be there, but it's replaced by glutamic acid, right? We have studied this in earlier classes as well. तो अगर ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिंगल जीन डिसऑर्डर हम बात कर, तो सिकल सेल एनीमिया इज अ ब्लड डिसीज. दिस इज व्हाट इट इज, अ blood disease. Okay, and mostly it effective in a black African, found in black Africans mostly, where the red blood cells become sickle cell. तो ये जो नॉर्मल होने चाहिए थे, ये क्या हो जाएंगे, सिकल सेल हो जाएंगे, mostly in black Africans. The sickle cell are rigid and exhibit a higher viscosity to flow. ये क्या करेंगे, higher viscosity to flow करेंगे. Okay, उनका aggregation ज्यादा होगा. The major characteristics of this disease are anemia and tendency of the red blood cell to change the shape, that we understood. At a low oxygen concentration, क्या होगा, at a low oxygen concentration. ये point बहुत important है यहाँ पे. Okay, so these cells are useless once there is a formation of sickle cell. So they have to be broken down and tend to jam in a capillaries. अगर ये sickle cell ऐसे ही बच गए, तो क्या होंगे, ये कैपिलरीज को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, राइट. इट लीड्स टू द ब्लॉकेज. सो द एब्सेंट और रिड्यूस ब्लड फ्लो रिजल्ट इन इस्चेमिक डैमेज. तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये इस्चेमिक डैमेज करेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेगा, इस्चेमिया, राइट. less, or we can say the oxygen supply is less. So sickle cell anemia is excellent example of single mutation. क्यों? Because valine चाहिए था, क्या हो गया, glutamic acid वहां पे आ गया. Okay. Now after that we are going to study the galactosemia. Now galactosemia. Okay. Can we talk about these disorder as lactose acid tolerance? Okay, can we? No. So galactosemia is a man inherited as an autosomal recessive. ये autosomal है, हमने बात की थी. Is affected the person is unable to convert galactose to glucose. So जो lactose intolerance है वो अलग है और ये अलग है. तो ये क्या हो रहा है, galactose से क्या बनाना है हमें, ग्लूकोज बनाना. तो ये अफेक्टेड होगा यहाँ पे. ठीक है. द डिसीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम जीपीटी. जीपीटी एंजाइम नहीं रहेगा. जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, गैलेक्टोज फॉस्फेट. गैलेक्टोज फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज. यूरिडाइल ट्रांसफरेज. ट्रांसफरेज. ओके. correct. Transferase is the enzyme name is here. Okay, so it is untreated infants develop the hepatomegaly. अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ प्रॉपर्ली, हिपैटोमेगाली होगा. किस में अनट्रीटेड रहेगा, अगर अनट्रीटेड में क्या होगा, हिपैटो, लीवर क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा. ओके. द जीन इन्वॉल्व इन गैलेक्टोसोमिया इज लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 9. तो ये कहाँ होगा, क्रोमोसोम 9 के शॉर्ट आर्म पे, शॉर्ट आर्म पे होगा, जो कि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा. ओके, सो वी हैव टॉक अबाउट रिसेसिव एब्नॉर्मल डिसऑर्डर. उसमें से हमने फिनाइल कीटोन यूरिया किया. फिनाइल फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या था, एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं था, जो कि लीवर में प्रेजेंट था. देन अल्कैप्टोरिया, ब्लैक यूरिन बोलते हैं उसको, वो हमने किया. वहां पे भी एंजाइम कौन सा प्रेजेंट नहीं था, अल्कैप्टोन ऑक्सीडेज प्रेजेंट नहीं था. देन अल्बिनिज्म में हमने देखा कि जो डोपा होता है वो डॉर्क ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है. अगर वो एंजाइम टायरोसिनेज ही नहीं रहेगा तो डोपा प्रोड्यूस नहीं होगा. तो मोस्टली आई डिसऑर्डर विल बी देयर. Then Tay-Sachs is a fatty metabolism disorder where what is happening over here is causes the mental retardation is going to happen. Then thalassemia alpha 4 चेन में से 2 चेन लेंगे क्रोमोसोम 11 में, और 16 अगर क्रोमोसोम होगा तो that is called as the beta thalassemia. And after that, we talk about sickle cell anemia, which is mostly affect in a black Africans. And then galactosomia, it is not related to the lactose intolerance. It is quite different, where the GPT enzyme, that is galactose phosphatidyl transferase, is not present. So on a chromosome 9, short arm is affected.
So that we have studied now. Okay, so I hope recessive, or we can say recessive autosomal disorder or single gene disorder are covered in this video. So I hope this video finds helpful to you.